Hello everyone, my name is Sakshi and today I would be talking about the commercial surrogacy ban in India. So this particular video is about the surrogacy procedure जो initially India में चलते आ रहे थे, the problems जो सोसाइटी ने जनरली फेस किया या लीगल प्रोसीजर्स जो हमारे पास प्रॉपर नहीं थे, लेजिस्लेशन जो उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं था, and one thing led to another and finally the government has decided to ban commercial surrogacy in India. This particular video is a part of series that is Learn with LegalEdge and we would be coming up with more such informative videos, so stay tuned. Before that, let's move on to the topic. So let's understand what surrogacy is. तो अगर मैं surrogacy को बहुत जनरल वे में या हिंदी में ऐसे लेमन टर्म में बोलना चाहूँ तो बेसिकली इसका मतलब होता है किराए की कोख. Means a woman who is not able to carry the child in her own womb, such couple hires another person and another woman carries the child for 9 months, nurtures the fetus and delivers the baby for some other person. तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है सेरोगेसी का जो बहुत सालों से सोसाइटी में रहा है एंड दिस हैज बीन अ काइंड ऑफ अ बून फॉर ऑल द कपल्स हु कुडंट हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ देयर ओन. अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? सो सेरोगेसी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक जेस्टेशनल एंड द अदर वन इज ट्रेडिशनल. सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दीज टू टाइप्स आर, स्टार्टिंग विद ट्रेडिशनल पहले. ठीक है, सो ट्रेडिशनल सेरोगेसी इज बेसिकली व्हेन अ कपल is not able to have a child of their own, maybe due to infertility of a woman or the man in the marriage, or maybe some other medical issue that the couple would be facing. So they hire another woman. The father of the child here mates with the woman and through that she gets pregnant. She delivers the child after 9 months for the couple and that is how the couple gets the child and the other woman acts as a surrogate mother. Gestational is one type of surrogacy which is much popular now. Reason being more ethical in nature and does not always involve the father, the intended father, to mate with the surrogate mother. So in gestational, basically the gametes of the man and the woman are met or basically are fertilized in a medical procedure in lab, that is through in vitro fertilization, IVF technology. I'm sure you would have heard of this, and then that is inserted or basically planted in another woman's womb. That is when she carries the fetus for 9 months, nurtures the child and then delivers the baby. So this is much ethical, much I would say a comfortable practice for the intended couple to have a child and for even the surrogate mother. So these are the two types of surrogacy which has been a part of society for a very long time, and gestational being a much favored one, much comfortable procedure for the couples to follow. Now moving ahead, कि surrogacy में issues क्या थे, क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमें surrogacy बिल लाना पड़ा एंड जिसमें हमने कमर्शियल surrogacy को बैन कर दिया. So moving to the next slide. So these are the issues I will discuss one by one. The first being surrogacy hubs in India. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि surrogacy को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था and this was the reason, in absence of any law or any kind of restriction, बहुत सारे इंडिया में hubs बन गए where women from lower middle class families or maybe poor families started becoming surrogate mother for the reason कि उनको बहुत पैसे मिलने लग गए. So for example, a couple who is not able to have a child of their own and is looking for a surrogate mother, बहुत सारे ऐसे clinics थे जिनमें आप जाके approach कर सकते हो. So the couple approaches one of those clinics. वो clinic में जो भी concerned person है वो उन्हें किसी intending surrogate mother से मिलवाता है. The couple is ready to pay a hefty amount. The woman is coming from a very poor family who is actually looking for a handsome amount of money through this 9 or 10 months of procedure. She agrees, the couple agrees, and that is how most of the surrogacies were taking place in India. So basically बहुत सारे women खुद को exploit करने में लगी थी. एक बार surrogate बनने के बाद वो दोबारा surrogate बनने तैयार थी, फिर तीसरी बार बनने तैयार थी, because for the obvious reason that people are poor, they need money and they saw it as a good opportunity. So this was one issue. This resulted in exploitation of surrogate mothers.
तो यहाँ से इशू शुरू हुआ। अ लॉट ऑफ टाइम कपल्स जिनने डिसाइड किया जितना पैसे देना, उन्हें वो उतना अमाउंट देने से मना कर दिया, मेडिकल एक्सपेंसेस लेने से मना कर दिए। इफ एट ऑल द वुमेन सफर्स अ मिसकैरेज और द चाइल्ड इज born with disability, they decided that we signed up for a healthy child and we don't want a disabled child. We never intended to take care of you in case you suffer a miscarriage. So ऐसे सारे इशू शुरू होने लग गए and women were started getting exploited. The surrogate mothers were exploited. This also resulted in abandoning the children. For example, if a couple signed up for one child and there were twins or a child with certain disability or certain issue, बहुत सारे कपल्स हैं जिनने उसकी कस्टडी लेने से मना कर दी, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमने जैसा बोला था हमें उस तरह का बेबी नहीं मिला and then we don't want it, so neither we are going to pay nor we are going to take the child. Now this started becoming a huge issue. The other issue was that unregulated and expensive medical procedure, the in vitro fertilization जो बहुत सारे couples opt करते थे for surrogacy through a surrogate mother, ये प्रोसीजर अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव था। फिर इसमें सेक्स सिलेक्शन होने लग गया, दैट दे वांट अ मेल चाइल्ड और दे वांट अ फीमेल चाइल्ड, तो ये अनएथिकल प्रोसीजर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी एक्सप्लॉयटेशन करने लग गया। सबसे बड़ा दिक्कत आया सिटीजनशिप का। बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आते थे लुकिंग फॉर अ सुटेबल सरोगेट मदर। उन्हें डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी मदर्स मिल जाती थी कमिंग फ्रॉम अ पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हु वर रेडिली available to become a surrogate mother. But when the child is born in India, the parents are from a different country, citizenship issues होने लग गए। A lot of countries did not acknowledge such kind of citizenship, and ऐसे में बच्चे के सिटीजनशिप को लेकर दिक्कत होने लग गई because the child is born in India, the parents are from different countries. There were also issues like parents were from two different countries. ठीक है, इसके अलावा एक और दिक्कत थी जो रिसेंटली 2-4 केसेस हो गए जहां पे एक कपल ने साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक सरोगेट मदर के साथ, एंड while the mother was pregnant and about to deliver the child, the couple got divorced. Now both the intending mother and father decided not to take the custody of the child. तो यहाँ पे इशू शुरू हुआ कि इफ दे वर विलिंग टू हैव अ चाइल्ड एंड नाउ दे आर डाइवोर्स्ड एंड दे डोंट वांट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, तो फिर हम ऐसे बच्चों का क्या करेंगे, इनका क्या फ्यूचर होगा। सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आने लग गए, एंड दैट इज व्हेन द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस एंटायर प्रोसीजर, रादर दिस एंटायर इंडस्ट्री नीड्स टू बी रेगुलेटेड. सो द गवर्नमेंट केम अप विथ Surrogacy Regulation Bill 2020. Just a second. Yeah. So, सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया Surrogacy Regulation Bill 2020 में, that it banned commercial surrogacy. मतलब आप किसी भी women को hire करते हो, you are completely paying that woman money, a huge lump sum money, hiring a woman to act as a surrogate mother for you. This was completely banned by the government. तो अब अगर कोई भी कपल, इंटेंडिंग कपल, अगर surrogacy के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहता है तो वो किसी भी वुमन को लमसम अमाउंट देके हायर नहीं कर सकता. द ओनली काइंड ऑफ सेरोगेसी विच इज अलाउड इन इंडिया इज अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी. अब मैं बताती हूँ अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी होता क्या है. सो अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी में बेसिकली अ वुमन बिकम्स अ सेरोगेट मदर फॉर एन इंटेंडिंग कपल, बट दिस वुमन इज डूइंग इट आउट ऑफ हर ओन विल एंड विदाउट एनी मनी. तो बेसिकली कोई भी मेरी फैमिली मेंबर या कोई भी मेरा क्लोज फ्रेंड, anybody who wants to become a surrogate mother for me can do that, and in that procedure I will not be paying her any lump sum amount. मेरे बीच में वो एक surrogacy का जो contract है वो नहीं होगा. Obviously the intending couple would be liable to take care of all the medical expenditure and जो health medicines और जो hospital के जो bills आएंगे surrogate mother के, वो सारी चीजों का ध्यान रख सकता है जो भी couple है यहाँ पे, but lump sum पे नहीं करेगा. इनफैक्ट पहले ऐसा होता था कि couples would go ahead and gift a house, gift a car to the surrogate mothers. तो इस तरह के जो भी expensive gifts हैं और जो lump sum amount है अब वो नहीं होगा. So commercial surrogacy is completely banned in the country. On the contrary, if any intending couple wants to go ahead and become parents through surrogacy, they can opt for altruistic surrogacy. Now, the next thing, who all can opt for surrogacy in India? So basically, Indian married couples,
where the husband and wife are both Indians, they are married in India, so they can opt for surrogacy. Indian origin married couples, so people living outside the country but they are of Indian origin and they are married, they can opt. And single women can opt to become surrogate parents. So what about single fathers? सिंगल फादर्स का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है. सो सिंगल मदर्स सेरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बन सकती हैं, मैरिड कपल्स बन सकते हैं, बट इसके अलावा और कोई नहीं है. व्हाट अबाउट फॉरेनर्स? फॉरेनर्स को इसमें मेंशन नहीं किया गया है. सो इफ अ फॉरेनर कपल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एन एनआरआई, wants to hire or wants to go for surrogacy procedure in India, उसका कोई प्रोविजन इसमें नहीं है और वो कंप्लीटली इस लॉ का पार्ट नहीं है. ठीक है. नाउ who can be a surrogate mother? पहले तो कोई भी women who's ready to get paid to become a surrogate mother was allowed to go for surrogacy, but अब ऐसा नहीं है. Here you have to look for a willing woman. A willing woman is somebody who is either a part of your family, तुम्हारे फैमिली में कोई रिलेटिव है, maybe your sister-in-law or your own sister, some cousin, or maybe a close friend, somebody who runs in the same family circle. तो अगर कोई ऐसी women है तो ही हम उसको surrogate mother बनने के लिए अलाउ करेंगे उस कपल के लिए, or else she will not be allowed. So basically not any random woman who is not at all related to you, who you have no idea like who she is, complete stranger cannot be a surrogate mother for a couple. Next thing, insurance cover for surrogate mother. Yes, very important. While the woman is pregnant and she is going through the entire pregnancy procedure, when she delivers the child, a woman goes through a lot of physical, emotional developments and a lot of basically issues through her body. ऐसे में a lot of women suffers from different diseases. बहुत सारी women होती हैं जिनको after pregnancy they start facing problems like thyroid or maybe blood pressure or certain other issues. Or if a woman dies or if a woman faces any trouble, she should have a proper insurance cover to make sure that whatever issue that she faces can be covered through the insurance policy. The next thing, a national and state level surrogacy board, very important. तो अभी हमारे पास रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था. अगर कभी इस बिल के आने के बाद कभी भी कोई भी कपल या कोई इंटेंडेड सिंगल मदर फेस करती है एनी इशू, और फॉर दैट मैटर एनी सरोगेट मदर कोई भी इशू फेस करती है, तो वहां पे एक बॉडी होना चाहिए जो इसको एड्रेस कर पाए. सो नेशनल लेवल पे भी एक बोर्ड बनेगा और स्टेट लेवल पर भी एक बोर्ड बनेगा सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए और जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए. देन प्रोविजंस टू रेगुलेट सरोगेसी क्लिनिक्स. यस, अ रैम्पेंट प्रैक्टिस विदाउट एनी लेजिस्लेशन, जहां पे ना पैसों का कोई हिसाब, ना एथिक्स का कोई हिसाब, और ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स और हब्स चल रहे हैं. तो उन सबको रेगुलेट करना सो दैट थिंग्स कैन बी डन इन अ लीगल मैनर एंड इन एथिकल मैनर. No sex selection to be permitted. Yes. So surrogacy में initially because the fetus was basically the eggs were met through labs, तो बहुत सारे ऐसे procedures लोग फॉलो करना चाहते थे या उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट देते थे, मेकिंग श्योर कि जो भी चाइल्ड हो, जो भी बच्चा हो, वो मेल चाइल्ड ही हो. सो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे बैन हैं बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज स्टिल गोइंग थ्रू दिस ह्यूज इशू ऑफ फीमेल फीटिसाइड. तो उस पूरे इशू को ध्यान में रखने के लिए हमने सेक्स सिलेक्शन कंप्लीटली बैन कर रखा है. नाउ कमिंग टू द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू सेरोगेसी. यस, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते थे. सो द सेरोगेट मदर जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को अपने वूम में रखा, शी हैज बीन नर्चरिंग द चाइल्ड. Of course, she gets emotionally attached to the child and the child is a part of her life. तो ऐसे में जब सारे के सारे टाइज हम खत्म करते हैं surrogate mother के साथ and the child becomes the part of the intended couple's family, the child should be given each and every right just like a biological child or just like a natural child of the family. So basically, we have to make sure that every children born through surrogacy gets all the basic rights like a natural born child. Also, parents cannot in any condition abandon the child. So, कोई भी बच्चा जो surrogacy के थ्रू पैदा हुआ है, अगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद पता चलता है the child is suffering from some medical issue, some issue in general, and he might be a normal child, might not be a normal child, and parents decide to abandon such child. Can they go ahead and do that? No. So whatever, however the child is,
it will be the responsibility of the intending parents to take care of the child as their natural born child throughout his life. So these are the basic issues which were addressed by the parliament under surrogacy regulation bill, and once the bill is passed, certain things will come into later. यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीजें जो एड्रेस नहीं हुई है. What about a couple from LGBTQ community, a transgender couple or a lesbian couple wants to go ahead and become parents through surrogacy? So that issue is not discussed here. यहाँ पे उसका कोई mention नहीं किया गया. What if अगर कोई person even after the commercial surrogacy is banned and is going ahead with commercial surrogacy, तो उस पर क्या penal action लिया जाएगा? Surrogate mother अगर कोई इस तरह का business करना चाह रही है, that she is becoming surrogate mother one after the other procedure and she is doing it purposefully, क्या उस पर क्या action लिया जाएगा? ये सारी चीजें अभी भी इसमें कहीं mention नहीं है. So hopefully you know, in certain times, in coming times, the parliament thinks that, you know, certain issues need to be addressed and they might, you know, pass the bill, make certain amendments and add to the law. But till then, this is exactly what surrogacy is. So surrogacy bill 2020 bans commercial surrogacy, but it has allowed altruistic surrogacy. So I will end the session here. Thank you for listening it, and we will come up with more such short videos discussing the new development in law. So I'll see you with the next video. Thank you.